So what's up guys, today I will make the drawing of vijay devarakonda, क्योंकि ये वाले रेफरेंस फोटोग्राफ है. And for this we have used color pencils of Domsky color pencils. So without wasting any time, let's get start the video. मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए डॉम्स की कलर पेंसिल्स यूज़ किया है. एंड आप देख सकते हो मैं इसे आई से स्टार्ट कर रहा हूँ. एंड इसकी जो आइज़ है, आई मीन जो इसकी ब्लैक पार्ट है आइज़ की, उसे ड्रॉ करने के लिए मैंने सिंपली डॉम्स की कलर पेंसिल्स का जो ब्लैक कलर है उसे यूज़ किया है. एंड जो इसकी आइज़ की जो हाईलाइट्स पार्ट है उसे देखते हुए ही हमें आइज़ को ड्रॉ करना है. तो कुछ इस तरीके से सिंपली मैंने इसकी आइज़ की जो हाईलाइट्स पार्ट है उसे देखते हुए ही कंप्लीट किया. ऑल्सो इसकी जो आईब्रोज है उसे भी ड्रॉ करने के लिए मैंने सिंपली ब्लैक कलर का ही यूज़ किया है. ऑल्सो जो इसकी स्किन टोन्स है उसे देने के लिए मैंने सिंपली इन 3 कलर का यूज़ किया है, जो कि येलो ऑरेंज है एंड पिंक है एंड लास्ट ब्राउन कलर. इन 3 कलर का यूज़ करके मैंने इसकी स्किन टोन्स को ईजिली दे दिया है. जैसा कि मैं आपको अभी बताया कि मैंने इसके स्किन टोन्स देने के लिए इन 3 कलर का यूज़ किया है. सो सिंपली फर्स्ट लेयर आपको इस येलो ऑरेंज का यूज़ करके आपको फर्स्ट लेयर दे देनी है. देन उसके बाद आपको ब्राउन कलर का यूज़ करना है. एंड आपको रेफरेंस फोटोग्राफ को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करनी है तो आपको थोड़ी थोड़ी पिंक कलर दिखेगी. सो देन आपको उसके बाद पिंक कलर का भी यूज़ करके सिंपली उसे उसमें ऐड कर देना है कि आपको एक स्किन टोन्स क्रिएट देखने को मिल जाएगी. ऑल्सो इस ड्राइंग को स्मर्ज करने के लिए मैंने इस वाइट कलर का यूज़ किया है. एंड सिंपली कुछ इस तरीके से मैंने इसे स्मर्ज कर दिया है. एंड ऑल्सो इसकी जो हेयर है उसमें मैंने चारकोल यूज़ किया है, जो कि सॉफ्ट चारकोल एंड नॉर्मल चारकोल का यूज़ करके मैंने इसकी हेयर को पूरा कंप्लीट करा था. एंड जो इसकी बियर्ड है उसमें मैंने सॉफ्ट चारकोल का यूज़ नहीं करा, आई मीन कोई भी चारकोल यूज़ नहीं करा है. ओनली मैंने डॉम्स की ब्लैक कलर का यूज़ करके इसकी बियर्ड को पूरा कंप्लीट किया है. आई होप कि आपने सारे बातों को समझ लिया होगा. सो कीप वॉचिंग. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? Doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind? It's gonna be hard. You run. I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same ways 100 times with the same soul. But do you ever try to puff on the right side, put it up in your mind? But do you ever try to puff on the left side, put it up in your mind?
आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को भी कर लिए सब्सक्राइब। जल्दी मिलता है इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।